The leading intellectuals came from Bengal for partition. The seeds for partition were actually sown in that particular state, which was opposed tooth and nail by Indian nationalists. Oh, but Indian nationalism is toxic masculinity. You can't even mention that. I'm sorry, I forgot. So the point is, Indian, whatever this, let's call them X, they did this. Okay. So when they decided to do that, effectively, there were elements even at that point of time who said, you're being communal. I'm sorry, this is not the way to communalize this particular issue. It's just a political decision. It has got nothing to do with religion. Anything that has to do with one particular religion has got nothing to do with religion. As simple as that. Remove it from the equation altogether, turn a blind eye and focus like a mountain goat with its head down and without looking at the summit. Keep walking. There's a desert called Dholavira in Gujarat. It's a part of Indus Valley civilization which dates back to 2900 BCE. It's one of the toughest places for people to live, but even in this desert, people built an entire civilization. They had forts, they had a well-planned town, they had an underground drainage system, and they had a large stadium with complex structure and seating arrangements. And they cultivated food in the desert. On top of that, 5000 years back, they knew the technology of filtering the salt water. And finally, we have evidences that indicates their trade relations with lands as far away as Mesopotamia. And how many of us Indians were taught about this? The increase in your oil imports that have happened between 2021 and 2022, it's 9 times higher as of this month. You have been questioned that increased oil import from Russia. Is that profiteering? Is that looking out for your own interest? What does that really mean for foreign policy in India? And how do you tie non-alignment with 9 times more oil imports out of Russia? Look, first of all, I don't see a non-alignment oil connection at all. I mean, today Europe is buying oil, Europe is buying gas. People need to understand, if you can be considerate of yourself, surely you can be considerate of other people. We have to manage it in a way in which its impact on my economy is not traumatic. Now, in terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. You buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. എൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ചവൻ അവൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങളാരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഐ ആം വെരി സീരിയസ്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങളാരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ? പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ടെററിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വെടിവെക്കേണ്ടി വരും. അവരെല്ലാം വിശ്വാസികളല്ലേ? അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയും അവർ ടെററിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, അവരല്ലേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ? അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ? അവര് ഇവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കശ്മീരികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ? അവർ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയവരല്ലേ? നമ്മുടെ മതം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപകടകരമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം. पाकिस्तान आर्मी में से कौन बेस्ट है भाई? ओब्वियसली पाकिस्तानी है, और तो दूसरी कोई नहीं सकती, पूरी दुनिया में नहीं है। इंडिया क्यों नहीं बेस्ट? वो सब सारे आपस में बराबर है इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है। बहुत खतरा न्यूक्लियर नहीं थे, अब न्यूक्लियर है, बड़ा खतरा है। वास्तविकता के साथ मुशर्रफ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करें, और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स था। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। इस देश के टुकड़े करना चाहेगा, हम उनके टुकड़े कर देंगे।
The Sapta Sindhu, it relates purely to all the small little rivers that flow into the Saraswati river. In fact, made up the Saraswati. So that's why it related to a very, very small area. But the Bharatas called their land Sapta Sindhu. And this idea of Sapta Sindhu was what other countries began to call it. So if you read the Avesta, which was the Iranian text from roughly the same time, they mention the Sapta Sindhu in there, except they changed the pronunciation to Hapta Hindu. And that is the word where Hindu comes. It is a mispronunciation of the word Sindhu. And Hapta Hindu then becomes the word by which the people in the Middle East begin to know the Indians. So Akbar's commander Asaf Khan defeated the army of Rani Durgavati, and Asaf Khan was not just eyeing on the kingdom but also on the queen. So once the defeat is inevitable, the queen killed herself. Then Akbar's army marched towards the queen's treasury, and there they killed Rani's son Veer Narayanan. And they were enjoying the wealth of the fort for 4 days, and on 4th day they opened a room and found a room full of burnt bodies of women. Yes, the women in the fort performed Jauhar. Only 2 women survived in that. They were hiding behind a large piece of wood. It was so large that it saved them rather than burnt them, and as usual they were sent to Akbar's court as slaves finally. So the main question I wanted to ask you, this is something that what is the meaning of the string? The word string occurred to me when I was in Samyama Sadhana at Isha. That was a program all about breathing techniques and all these things. And there is this a statement given by Lord Krishna when asked about why he wears a garland. He explains that the string which connects all the flowers, similarly there is a string which connects all the life forms, which is the breath. The breath that goes through the body of a dog is not different from which is going into you. Yes. And the small microorganisms and all the things that are breathing is the same breath. And parallelly this from the West we hear something known as string theory, where everything in the universe is connected to a string. Yes. And now I wanted to start a platform with this name, String, where I want to connect all the nationalists and wake up all the sleeping Hindus. कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। लेकिन एक बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और डरने वाली नहीं। वो तो उसके जो पुरानी इतिहास देखोगे तो कितनी डरी वो। बांग्लादेश के युद्ध में बच्चों को लेकर इंग्लैंड भाग गई थी। फिर 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने दोनों बच्चों और पति को लेकर के इटालियन एम्बेसी में जाकर छिप गई। मैं था जब इंदिरा गांधी रोते रोते आई मोरारजी के पास, और मोरारजी ने एम्बेसडर को फ़ोन किया कि वो पागल लोगों को भेजो, मैं देख लेंगे, कुछ नहीं होगा उनका। ये विश्वास देने के बाद बाहर निकली। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो एक प्राइवेट प्लेन में सारा जेवर, उनका सारा चीज़ सामान लेकर उन्होंने सिंगापुर में जाकर जमा कर दिया। तो इनका जो इतिहास है वो तो डरने का है।